to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक साथ वेकेशन पर थे? पेरिस के बाद शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की नेक्स्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या है? मलाइका अरोरा की बोल्ड ड्रेस ने किया सभी को इम्प्रेस. हाय मैम. हाय सर. क्या कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक साथ वेकेशन पे थे? सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी को एक साथ किया गया क्लिक. कियारा अडवाणी वेकेशन पर अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर गई थीं. कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा वेकेशन से लौटे एक साथ. रूमर्ड कपल को किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट. रिसेंटली कियारा अडवाणी अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ दिनों का ब्रेक लेकर मच नीडेड हॉलिडेज पर गई थीं. ऐसे में कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा भी उन्हें इस हॉलिडे पर अकम्पनी कर रहे हैं और अब ये बात कंफर्म भी हो गई है जब रूमर्ड बो सिद्धार्थ मल्होत्रा को कियारा अडवाणी के साथ वी आवर्स पर मुंबई एयरपोर्ट पर क्लिक किया गया था. दो बोथ क्विकली एग्जिटेड द प्रेमाइसेस ऑफ द एयरपोर्ट, लेकिन तब तक कैमरास में दोनों को कैप्चर किया जा चुका था. आप देख सकते हैं एयरपोर्ट से आई कियारा अडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा की इन लेटेस्ट पिक्चर्स को. इस वक्त कियारा अडवाणी is in a pretty green t-shirt teamed with blue denims and shoes, while Sidharth Malhotra wore a blue tee paired with white trousers and shoes. बता दें कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप को लेकर न्यूज में बने रहते हैं. पैचअप के बाद दोनों को कई बार साथ स्पॉट किया जा चुका है. हालांकि अपने रिलेशनशिप की खबरों पर दोनों ने कभी भी खुलकर कुछ भी नहीं कहा है. कियारा अडवाणी ने अपने एक रीसेंट चैट के दौरान ये भी कहा था, I had already decided that I will never speak about my personal life and I have never commented on it. People can assume what they want. I will never confirm or deny because that is the only place in my life which is personal and private. Moving on to their work front, अपनी लेटेस्ट रिलीज जुग जुग जियो की सक्सेस को एंजॉय कर रही कियारा अडवाणी's projects include RC15 with Ramcharan. She has recently said that her first ever pan-India project directed by S. Shankar has been quite a unique experience for her. इसके अलावा कियारा अडवाणी के पास विकी कौशल और भूमि पेडनेकर के साथ गोविंदा नाम मेरा है. On the other hand, सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास भी काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें थैंक गॉड के साथ he will be seen in the film titled योद्धा and Mission Majnu with रश्मिका मंदाना. लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर इनके इस रीसेंट अपीयरेंस से इस बात का अंदाजा तो लग ही गया है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर एक साथ हॉलिडेज एंजॉय कर रहे थे. शिल्पा शेट्टी कुंद्रा है फैमिली वेकेशन पर. पेरिस के बाद शिल्पा शेट्टी का नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? यमी डिजर्ट्स को देख शिल्पा शेट्टीज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग. फ्रांस में फैमिली हॉलिडे कर रही शिल्पा शेट्टी ने पेरिस को कह दिया है बाय. और इसी के साथ अब शिल्पा शेट्टी कुंद्रा अपने हबी राज कुंद्रा के साथ कोटे दे अज़्योर में कर चुकी हैं एंटर. शिल्पा शेट्टी कुंद्रा भी बाकी बॉलीवुड सेलेब्स की तरह हॉलिडे मोड में है और अपने किड्स वियान और शमीशा और मदर सुनंदा शेट्टी और सिस्टर शमिता शेट्टी के साथ फ्रांस के कैपिटल में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अपने ट्रिप के कुछ खूबसूरत वीडियोस और फोटोज अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं. लेकिन अब शिल्पा शेट्टी कुंद्रा has given a sneak peek into her journey as she leaves Paris and enters Côte d'Azur via Saint-Tropez.
video shared by Shilpa Shetty Kundra, we can see her walking towards a chopper, while in another video, we can see her sitting in it. She captioned the video as Saint Tropez. एक दूसरे सेल्फी वीडियो में शिल्पा शेट्टी कुंद्रा can be seen capturing the beautiful French Riviera with husband Raj Kundra. शिल्पा शेट्टी कुंद्रा अपनी इस वेकेशन को पूरी तरह से जी रही हैं और बीइंग अ फूडी वो यहाँ से यमी डिजर्ट्स भी एंजॉय कर रही हैं, जिसे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एक वीडियो में डिजर्ट लवर शिल्पा शेट्टी कुंद्रा कैसे फनी एक्सप्रेशंस दे रही हैं, as if she was dying to have those mouth-watering dishes. The actress was also seen drooling over the dessert as she shared a boomerang of herself with a piece of brownie in her hand. Surely इसे देखने के बाद शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के फैंस के मुंह में भी पानी आ गया होगा। Moving on to her projects, she will next be seen in Indian Police Force. Directed and produced by Rohit Shetty, इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा भी हैं, who will play a Delhi police officer. शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने रिसेंटली रिवील किया था कि वो ये सीरीज सिर्फ अपने सन वियान की वजह से कर रही हैं। बता दें, ये शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का OTT डेब्यू भी होगा जो नेक्स्ट ईयर स्ट्रीम करेगा और इसके साथ शिल्पा शेट्टी रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स फिल्म का हिस्सा बन जाएंगी। Stunning sheer gown with a plunging neckline dress में मलाइका अरोरा का स्टाइल आया फैंस को बेहद पसंद। मलाइका अरोरा की बोल्ड ड्रेस ने किया सभी को इम्प्रेस। मलाइका अरोरा का हॉट अंदाज हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। मलाइका अरोरा नजर आई स्टनिंग sheer गाउन में with a plunging neckline। इस साल फेमिना मिस इंडिया पैजेंट की जूरी में शामिल मलाइका अरोरा ने अपने फैशन और स्टाइल से सभी को इम्प्रेस किया। मलाइका अरोरा के इस अल्ट्रा ग्लैम अवतार की पिक्चर्स जब सोशल मीडिया पर आईं तो वायरल हो गईं और फैंस ने इस पर रिएक्ट करते हुए कई कमेंट्स भी किए। वैसे जहां मलाइका अरोरा अपने ग्लैम लुक के लिए प्रेज हुई, वहीं एक स्टोर लॉन्च में पहुंची मलाइका अरोरा को अपने आउटफिट की वजह से ट्रोल भी किया गया था। एक डिजाइनर स्टोर लॉन्च पर मलाइका अरोरा ब्यूटीफुल पैंट सूट विद अ डीप नेक क्रॉप टॉप में नजर आई थी एंड दिस क्रॉप टॉप गॉट अ बिट स्पॉइल्ड व्हाइल बीइंग फोटोग्राफ्ड, जिसके बाद मलाइका अरोरा अपने टॉप को फिक्स करने के लिए कैमरा फ्रेम से आउट हो गई। जहां एक तरफ लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था, वहीं बहुत से फैंस ने उन्हें प्रेस भी किया था। वैसे यही नहीं, डिजाइनर दिया राजवीर के मसाला ह्यूड रोज क्लिविड रिवीलिंग गाउन में भी मलाइका अरोरा के लुक को बहुत पसंद किया गया था। इस डीप नेक लाइन, रफल्ड बटरफ्लाई स्लीव्स और थाई हाई स्लिट गाउन के लुक को मलाइका अरोरा ने स्टेटमेंट इयररिंग्स एंड मैचिंग हाई पंप्स के साथ कंप्लीट किया। और जहां तक इस ड्रेस में मलाइका अरोरा की मेकअप की बात करें, तो मलाइका अरोरा's मेकअप्स सेंटर पॉइंट वर her deep maroon lips and well-etched eyebrows. She kept her hair simple and straight with a classic center parting. Hello and welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. Today's guest is raring to go and ready to make an indelible mark in Bollywood. Please join me in welcoming my dear friend Sanjana Sanghi.
Hi Sanjana, how are you doing today? Hi, Parul. I'm doing very well up here in clear skies and snow-capped mountains. With a background like that, how could you not be doing well? Like, this is your first theatrical release, and unfortunately, the circumstances of the release of your first film, Dil Bechara, were very heartbreaking for you personally as well. I know that was your debut film, and to have such great tragedy attached to it is very, very heart-wrenching. Does Om sort of feel like a debut all over again in some ways in terms of like cinematic release, promotional activities, all the joyous things that a debutant should be able to experience on their first film? It's true that Dil Bechara was always meant to be a theatrical, and we can only be grateful that the millions of people that did get to watch it in the circumstances that they did. I'm only grateful for that. But I am the feeling of Om and working on it and bringing it is its own unique and special kind of emotion. I don't attach it as much to a feeling of a debut because frankly, I think I've mentally moved on from that. I am almost completing my third film as a leading actor. It's what I'm filming for right now. So as an artist, I have moved beyond that in my own journey. But the excitement of, like you said, going out there, knowing that it's going to be releasing worldwide in theaters, the nervous jitters are different. So I'm calling Kapil and Adi up all the time, just being like, is this normal? Am I supposed to feel like this? Your profession to it, which is literally based on presenting yourself to an audience and being in the public eye. What does that sort of look like for you? That struggle or just that mental sort of, obstacle to kind of go over? I was very curious about what my relationship with being a public person would be. When Rockstar happened, when I was just a kid, and I didn't realize how I suddenly stumbled into films. I would see Ranbir and I would see Imtiaz, and I would be in equal parts awe and wonder as to how there's this utmost ease with just giving so much of yourself to an entire nation. And today, honestly, I've begun to enjoy it so much. Like, I can't even tell you. How is your relationship with an audience and the public sort of evolved? Because like you said, you have been in the public eye since 13 and you've done like little work in the middle. You've had like supporting roles and things. You've been in a lot of ads and everything. So how has that relationship evolved from then to now that you're a leading artist in this industry? I think what I've realized is that there's a lot of power in just the fact that my true, there's this group of people who call themselves Sanjanians who are like Love groupers. And at least I'm more cognizant of their emotion because I see it a lot on social media, and there's so much power in them seeing me grow up in a way. I don't have too many reference points for other contemporaries of mine who, they're like, when you were 17, you did that when you were in college, and that allows me to just be myself because they've seen me, they know me in my most honest and raw form, which was 13 years in Mandy, and I don't have to be anyone else. So I feel really at ease with them. And the fact that I'm a regular girl from Delhi, went to college in Delhi University, there's so much that I feel we share, whether it's about chasing dreams that seem kind of achievable or challenges seem daunting. I love chatting with them and talking to them about what's occupying their mind and helping in whatever way I can. You're starring opposite Aditya Roy Kapur in this film, and I believe you didn't really know him properly prior to signing this movie, right? No. So how easy or hard was it to build that chemistry between you two, which could then be translated onto the screen? Like, did you guys hit it off from day one? What's that rapport like? I mean, it wasn't, nothing about it was difficult at all. I think that it's, with co-actors or with directors, as actors, we're very like, we thrive on vibes and energy as people because really that's our job also. And when you enter a room and you meet someone, you just know. And with it, not just with Adi, but Kapil, Adi, and I, the three of us, it's really been one of the most, I almost always get
dumbfounded when I have to talk about it, because I know that it's so special that no other film of mine may be able to compare back. Okay. Because to know that there are two people who are always there for you. You're currently in the hills shooting for Dhak Dhak. How is that going? What can you tell me about that project? Your co-actors who are, Ratna Pathak ji and Diya and Fatima, incredible co-actors. What's the prep that's kind of gone into it? This is, I've been out on the road for weeks now. We are in a different place every day, literally. The terrains are hard, the air is thin, and we're riding bikes. So it is, I'm in it right now, so I don't think my mind's processing how overwhelming the experience is. But I feel alive from inside. And I get the sense that we're onto something special, and I really hope that we are, because the sisterhood here it's so beautiful to come back from shoot and have that cup of chai with Ratna ma'am, crack some jokes about Sara Bhai versus Sara Bhai, and talk about our day that I'm having to make. It must be a very empowering set to be on, like 4 very strong women sort of kind of narrating their own story. It's 4 women, and we're a predominantly female crew as well. So it is, the female energy is thronging, and it's so unique because, we're all kind of coming in with our own perspectives. Right. And Tarun, our director, is super collaborative. So we're really improvising as we go, because you never know when it starts raining, when Right. it's sunny, and we're all just like out here as a team hustling, because if we don't do it in these 2 months, we won't get to do it for a year, Right. because the rain starts. So we're on like a strict kind of time. Sked, but it's going to be an action-packed 22-23 for Sanjana. Yes. Thank you so much for joining me, Sanjana. It's been an absolute pleasure. I wish you all the best. Can't wait for you to come back and for us to do this in person soon. Thank you, Parul. See you soon. Coming up on the show, उर्फी जावेद ने अपने इस बोल्ड बयान से सबको किया हैरान। मैं एक दिन कपड़े ही नहीं पहनूंगी। उर्फी जावेद ने क्यों कहा वो एक दिन कपड़े ही नहीं पहनेंगी? उर्फी जावेद ने अपने इस बोल्ड बयान से सबको किया हैरान। क्या उर्फी जावेद का ये जवाब है उनके हेटर्स के लिए जो उन्हें करते हैं टारगेट? सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद अपनी हर आउटिंग के बाद सोशल मीडिया पर धूम मचाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उर्फी जावेद ना तो फिलहाल किसी टीवी शो या म्यूजिक वीडियो या फिल्म में नजर आने वाली हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फिर भी उर्फी जावेद वायरल रहती हैं। और रिसेंटली मुंबई में हो रही भारी बारिश के बाद उर्फी जावेद सज धज के ब्लू ड्रेस में पापराजी के सामने आई और यहाँ बातों बातों में उर्फी जावेद ने कह दिया कि वो एक दिन कपड़े पहने बिना ही आ जाएंगी। मैं एक दिन कपड़े ही नहीं पहनूंगी, बात ही खत्म हो गई। क्या सरप्राइज यार, एवरी आउटफिट इज सरप्राइज। मतलब व्हाटएवर आई वेयर इज ऑफ कोर्स, बट ऐसा मेरे दिमाग में नहीं कि मुझे ऑडियंस को सरप्राइज देना है। मुझे जो पसंद आएगा मुझे बस वो पहनना है। दरअसल यहाँ उर्फी जावेद का इशारा था उनके हेटर्स की तरफ। उर्फी जावेद जब भी अपने यूनिक और बोल्ड ड्रेसेस में नजर आती हैं, उन्हें जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि पापराजी के साथ बातों बातों में उर्फी जावेद ने कह दिया कि वो किसी को सरप्राइज देने के लिए ऐसे कपड़े नहीं पहनती, उनका जो मन करता है वो पहन लेती हैं। ऐसा मेरे दिमाग में नहीं कि मुझे ऑडियंस को सरप्राइज देना है। मुझे जो पसंद आएगा मुझे बस वो पहनना है। वैसे उर्फी जावेद ने यहाँ एक और बड़ी बात क्लैरिफाई की कि उनका नाम लोग गलत लेते हैं, क्योंकि उनके नाम की स्पेलिंग URFI नहीं बल्कि UORFI है। पहले बताओ मेरे नाम की स्पेलिंग क्या है? जो मेरे नाम की सही स्पेलिंग बताएगा मैं उसी तरह देखूंगी। नहीं पता अभी यहाँ पे देखिए ना, काम करें UORFI। अच्छा तुम्हारी तरफ देखूंगी। वैसे फैंस ही नहीं, ज्यादातर मीडिया और पापराजी को भी नहीं पता था कि उर्फी जावेद का नाम URFI नहीं UORFI है।